Dear students, my name is Dr. Ravinder Kaur. I am lecturer in chemistry in Meritorious Senior Secondary School, Gurdaspur. Today I am going to explain the theory, that is the crystal field theory. This theory is actually proposed by John Matthey and Hans V. Clark. Okay. Why this theory is proposed? Because of the limitations in previous theories, theories like valence bond theory. In this theory, there are many limitations, like it does not explain the energies of electrons. It explains the energies of strong field ligands and metal ion, but does not explain the energy of electrons. Secondly, it does not explain the electron transitions. Why, how the electron transferred from or shifted from one level to another level, or it does not explain the difference between strong and weak field ligands. Why strong field ligands pair up the electrons and why not the weak field ligands pair up the electron, this can't explain by the valence bond theory. Next is it doesn't explain the stability of the complexes. There are two types of stabilities. One is the thermodynamic stability and kinetic stability. It does not explain any type of stability of the complexes. Now, to overcome these limitations, crystal field theory came into existence by the scientist already explained. This theory is proposed basically for transition metal complexes. It explains the detailed bonding study of transition metal complexes. Originally, it is developed to explain the property of crystalline materials, why crystals show reflection of light, transition properties, and many other. And secondly, this theory is proposed for the study of electronic interaction between lone pair of electrons which are involved in the coordination. Next, to understand this theory, we have to explain the assumptions of this theory first. To overcome the limitation of valence bond theory, this theory separates the metal ligand energies. Then it explains how metal and ligand interact and how the energies of d orbitals or metal orbitals affected by the approach of ligands. Next is it explains the coordinated complex of metal and ligand or stabilization. How with which geometry, with which shape and with which 3D arrangement in the space the metal and ligand interact and get stabilized. This does not consider the properties or the d orbitals. This is the only arrangement of the metal and ligand to how they get stabilized and give our perfect geometry or stabilized geometry in 3D. Next, it also explains the destabilization due to the electron-d-electron repulsions. When electron or when ligand having electrons or lone pair of electrons or negatively charged approaches to the metal ion or metal orbitals, the electrons in d orbitals of transition, they get destabilized with the approach of the ligand. This is also explained by crystal field theory very well. And next is the separating due to octahedral field. When 6 ligands in an octahedral complexes, there are 6 ligands around the central metal ion arranged on the particular axis, and how with the approach of ligands, the d orbitals get separated. So this is also explained by the crystal field theory. Next is the electron pairs on the ligands are viewed as positive, as quite negative charges. The ligands are of two types. One with negatively charged and other are neutral molecules having lone pair of electrons. But with the ligands with the negative charge are called point charges, and the ligands with the lone pair of electrons, or we can say neutral ligands, are called point dipole charges or point dipoles, we can say, not the negative charges. Point negative charge is used for the ligands having negative charge, and they interact with the d orbitals on the central metal. This theory is only concerned with the d orbitals in the transition metal, no any other orbitals it is considered. In the next slide, there shows the shapes of d orbitals. As I already discussed, जब मैं पहले ही सबको दस्या है कि इसके विच जेडे ligands जेडे only affect the d orbitals of transition metals, ते जेडे d orbitals है सिर्फ उन्होंने ही affect करते हैं. So in case of d orbitals, we have to first see the shapes of the d orbitals. We can say there are 5 orbitals of d. One is the dx square minus y square, other is the dz square, and 3.
dyz, dyz, dzx and dxy. We can see that in octahedral field, in d orbitals, there are only two. One is dx square minus y square and one is dz square are present on the axis. They shows the x-axis, y-axis, and here shows x-axis, y-axis, and z-axis. We can see that only two orbitals, dx square minus y square and dz square, are present along the axis, on the axis. Other orbitals we can see, if it is x-axis, y-axis, or z-axis, the y-z orbital is present in between the axis, not on the axis. Or d again same with the dzx and same with dxy. These are present within the axis, but these two orbitals are present along the axis, on the axis, not within the axis. So this is the brief description of the shapes of d orbital. And next thing, this is the octahedral field. This is the octahedral complex with the m metal line, charge n plus any charge on the metal line. Ligand is represented by L, and this shows the x-axis, y-axis, and z-axis. Now we can see that the ligands are approaching along the axis towards the octahedral field. Ligands are approaching along the axis. Okay. Now, in this case, next slide please. Now, there are two orbitals along the axis. One is dx square minus y square, one is dz square, and other are present in between the axis. Now, in this case, ligands which are present on, which are approaching towards the metal line through the axis, along the axis, they will feel more repulsions as compared to the d orbital which are present within the axis. These are the axes which are present within the axis. They feel less repulsions as compared to the ligand present along the axis. जो ligand बच्चे along the axis मतलब axis से बिल्कुल उत्ते पे है वो ज़्यादा जड़ियाँ repulsions feel करेंगे as compared to जेड़े metal के orbitals axis के बीच है वो बेटा घट जड़ियाँ repulsions है वो feel करेंगे. Next, from this side we can see this is the octahedral field. ये octahedral field है ligand की. When the ligand approaching, ligand approaching along the axis. So the orbitals present along the axis. Along the axis मतलब on the axis. This is z square. This is x square minus y square. They feel more repulsions. That's why they are moving higher in energy. ऊपर energy तरफ चले जाते हैं because they are more repulsive. They feel more repulsions. That's why they are moving higher. And the other orbital which are present within the axis, in between the axis, they feel less repulsions. Due to less repulsions, their energy is decreased. Energy is less. So next. Here we can see the two orbitals which are shifted higher in energy is called doubly degenerate or EG. Doubly means two, degenerate means equal energy. Equal having, matlab these two orbitals have equal energy. Just they get higher in energy because of the approach of the ligands. ये ऊपर चले गए हैं just क्योंकि इन्होंने ligands की repulsion ज़्यादा feel हो रही है. क्यों ज़्यादा feel हो रही है? क्यों? क्योंकि ये axis से बिल्कुल ऊपर present है. And these orbitals are lower in energy because they feel less repulsions. Why they feel less repulsions? Because they are present within the axis. The axis they which है. So ligands are not approaching on the axis within the axis. They are approaching on the axis. So these are called triply degenerate. Triply degenerate मतलब there are three orbitals. Triply means three. Degenerate मतलब three orbitals are of equal energy. That's why it is written over there T2G. Next, in this slide you can see there is the 5d orbitals. I didn't show the name of the orbitals because it is shown here. I think it is clear from this slide. Actually, the two orbitals dx square minus y square के ऊपर हो गए energy और जड़े within the axis के नीचे हो गए. Now this gap is called ये जो separating gap है पहला d orbitals जड़े repulsions तो बाद थोड़े से higher हो जाते हैं energy पहला degenerate है. When ligand approaching towards the metal line मतलब they get higher in energy थोड़े से और ऊपर होने के बाद when ligand get bounded to the metal line they get separate the d orbitals into two sets. One is ऊपर वाला set हो जाता है, next नीचे वाला set.
gap which is shown here is called crystal field splitting energy. It is denoted by delta node. Delta is your crystal field splitting energy. This node, not the O is for octahedral field. If it is written here, it is written T, then it is for tetrahedral field, and it is written O मतलब octahedral field, because we are considering 6 ligands in which 2 are approaching on the axis and other 3 are approaching within the axis. d orbitals ਨੂੰ ਦੋ sets ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰ ਦੇंगे. Now this energy gap, how much magnitude it has, this energy gap? It has delta naught which is equal to 10 dq. dq means the differential of quanta. Differential means how much energy is used by these 3 orbitals and how much energy is used by these 2 orbitals, upper one. So these two sets use 0.6 delta naught or 6 dq. 6 dq मतलब total 10 dq, out of which 6 dq energy is used by, quanta of energy is used by these 2 orbitals. मतलब कि total 10 dq है. differential of quanta, differential मतलब how much part of the total 10 dq energy is used by these orbital and how much part is used by this part use 0.6 delta q or 6 dq of quantas energy, and these 3 orbitals use minus 0.4 delta q or 4 dq. It is written minus. Why it is written minus? Because it is lower in energy. Lower in energy, that's why written minus. It with this plus 6 dq, that's why written plus. Because why it is written plus? Because these are higher in energy. Next slide. Next slide. Now, I already explained the crystal field stabilization energy. There are some definitions of to explain crystal field energy clearly. Depending upon the field created by the ligands, the electrons are occupying the various orbitals available. Orbitals are only d orbitals. Which type of orbitals are available to the ligand? They interact with these orbitals. When T2G levels are getting filled, the system is getting lowered in energy. Empty orbital with no electrons has higher energy. When electrons get filled into the orbitals get stabilized. Stabilized मतलब they become lower in energy. Because the electrons get filled into it, they get stabilized. Next, energy content increases if the energy content of T2G orbitals increases when, or full d orbitals increases when Eg levels are filled. When the electrons, if 6 electrons are filled in T2G level and the next electron will be filled in Eg level, the energy of the complex increases. Why it is increases? Because Eg levels are higher in energy. Higher in energy with 10 dq. They absorb 6 dq. Higher orbitals of Eg that are doubly degenerate ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ Eg level ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy 6 dq ਹੈ. They are using 6 differential of quanta of energy. That's why कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ energy ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So जिन्ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साडे कोल T2G ऑर्बिटल्स फिल होंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होएगा. जितना ही नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल हो गए और ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन तो साडे कोल कॉम्प्लेक्स गेट डीस्टेबलाइज्ड. कॉम्प्लेक्स गेट डिवाइड, कॉम्प्लेक्स गेट डीस्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी. एनर्जी कॉम्प्लेक्स दी बढ़ जाती है. सो दिस इज द रीजन and it is only explained by crystal field theory why some complexes are kinetically or thermodynamically stable and why not others get not stabilized. This is purely properly explained by the crystal field theory. Next, if both of them are filled, then the difference between increases and decrease in energy is calculated, which is called crystal field stabilization energy. कि पूरा का पूरा क्रिस्टल है, कॉम्प्लेक्स है, वो कितना स्टेबलाइज्ड होएगा दोनों दी किसी दसांगे कि वो 3D या स्पेस दे विच किस तरीके नाल स्टेबलाइज्ड है वो सानू कितों पता चलेगा कि ओदी एनर्जी कितनी घट है. मतलब ऊपर वाले ऑर्बिटल्स फिल होने तो बाद नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल होने तो बाद दोनों को ਅਸੀਂ प्लस करांगे कि टोटल एवरेज एनर्जी
साडे कोल कितनी आई है, दिस विल गिव द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। अगर तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो प्रॉपर सारियां जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है, सब करेगा। अगर नहीं स्टेबलाइज्ड है तो वो कंसीडर ही मतलब कि एग्जिस्ट ही ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। सो दिस इज ओनली एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कि लिगेंड अप्रोच होंदे है, टूटते हैं दोनों साइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ डी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन फिल होने तो बाद दिस गिव्स द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ crystal field stabilization energy has some factors with which the energy get increased or decreased. There are some factors. These are actually divided into two parts. Some factors are considered only metalline and other factors are only with the ligands. So कुछ फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਆਂ। वन इज मेटलाइन एंड अदर इज दी लिगेंड्स। ठीक है, मेटलाइन्स दे विच बेसिकली साडे कोल डी ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही ਅਸੀਂ कंसीडर करने हैं और साडे कोल ਜਿਹੜੇ लिगेंड्स आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साडे कोल बेसिकली आ जाएगा स्ट्रांग फील्ड, वीक फील्ड जो ਅਸੀਂ ऑलरेडी बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मेटलाइन्स ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ फैक्टर हो सकते? मेटलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली डी ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ चार्ज मेटल आयन इज ओनली कंसीडर्ड व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Positively charged, so first is the same metal ion with a different charge. Why we can see in VBT that some of the complexes with metal ion showing low spin complexes, some show high spin complexes. Why is it so? This is only depend upon the crystal field stabilization energy. Every complex, हर complex की एक कोशिश है कि अपनी एनर्जी ਨੂੰ lower रखे, घट तो घट रखे। वो किस तरीके ਨਾਲ lower रखेगा? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है ये वाले फैक्टर कंसीडर होंगे। सो फर्स्ट फैक्टर साडे कोल की है मेटल से, ना दोनों केसेस च एग्जांपल ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, 3 पॉजिटिव, 3 आयन के कैटायन है और इन दिस केस हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। इन दिस केस चार्ज इज 3 पॉजिटिव एंड इन दिस केस 2 पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। इस दे विच बेटा D7 केस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D6 केस है। ठीक है, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन D and there are साढ़े को 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो यू कैन सी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दिस केस इज 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स, इन दिस केस 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स। जितना ज्यादा चार्ज होएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर या मेटल आयन के ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज होएगा उन्नी साडे कोल डी सेट जेडे ज्यादा स्प्लिट करनगे, मतलब कि उन्हां दे विच एनर्जी गैप जेड़ा है उन्ना ही ज्यादा होएगा, उन्नी ज्यादा स्प्लिटिंग होएगी। Secondly, different metal ion with the same charge, charge same है but उन्होंने ion देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ metal ion कोबाल्ट है, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ metal ion निकल है। सो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएंगे, कोबाल्ट है तो D7 केस हो जाएगा, निकल है तो D8 केस हो जाएगा। अगेन इलेक्ट्रॉन्स ਨਾਲ भी ਅਸੀਂ एक्सप्लेन कर सकते हैं बट देखो इन दिस केस कोबाल्ट निकल, साइज ऑफ कोबाल्ट इज शॉर्टर देन निकल। ठीक है, सो splitting in this case is more and in this case is larger. Why is it so? Because the nuclear charge in this case is more and in this case nuclear charge is less. Okay, next is the different metal ion with different charge but same number of d electron. Charge is different, metal ion is also different but the number of electrons in both the cases are same. So this can also be explained with like this. In this case chromium shows the splitting of 7,400 and in this case 12,400 and in this case the metal ion with larger size ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ chromium is D3 केस बट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ vanadium ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। Next is the different metal ion with the same charge but different principal quantum number. Now we know that transition series has 3 transition series, first transition series, second and third, and down the group as we can see in first transition series size is smaller, second transition series size is larger and in third transition series size of the metal ion is also larger. Now in this case iridium ligands are same, charge is also same but this belongs to third transition series, second transition series, first transition series. In this case
of rhodium, fourth shell is involved. In case of cobalt, third shell is involved. As the size increases and principal quantum number fifth shell से चला गया इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल से चला गया, थर्ड शेल से चला गया. इधर न्यूक्लियस के ज्यादा नेड़े है, सेपरेटिंग कट हो जाएगी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियस तो थोड़ा दूर होगा, सेपरेटिंग बढ़ जाएगी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियस के बहुत दूर हो जाएगा, सेपरेटिंग और ज्यादा हो जाएगी. So as the size of the metal ion increases, separating of the octahedral field increases. फर्स्ट जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती चीज सी वो मेटल आयन सी. ठीक है, सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, એનર્ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡ, ਕਿ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਬੀਟੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਫੀਲਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ. ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. और ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਗੈਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕसेस ਬਣਾਉਂਦੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. only high spin and low spin complexes are based on the splitting of d orbitals. लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप को ज्यादा कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर ट्रांजिशन करना, जंप करना औखा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप नीचे जेडे वो पेयर अप हो जाएंगे. इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ये रिपल्शंस घट कॉज करते हैं विद द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbitals. घट रिपल्शंस करेंगे तो स्प्लिटिंग जेडी है वो घट होएगी. स्प्लिटिंग घट होएगी तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप इन द ईजी लेवल्स के ऊपर जेडे वो शिफ्ट हो जाएंगे. बेसिकली these complexes are more stabilized with the strong field ligand and weak field ligand वाले जेडे complexes बनते हैं they are basically not so strong, मतलब weak जेडे complexes है वो बनते हैं. फिर again जो when the common ligand are arranged in order their increasing splitting power, the series is obtained called spectrochemical series. Spectroscopy is basically concerned with the interaction of radiation with metal complexes. Metal complexes ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ radiations ਆਣ ਕੇ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ then electron shift ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ spectros ਸਾਡੇ ਕੋਲ series ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ transitions ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ upper shift ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ out of the box. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖੋ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫੀਲਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, तीसरे इलेक्ट्रॉन तो बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो की करे ऊपर जेड़ा खाली ईजी ऑर्बिटल है उत्थे चला जाए, या की करे कि जेड़ा चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही जेड़ा साडे कोल T2G ऑर्बिटल है उन्हां दे विच ट्रिपलेट डीजनरेट ऑर्बिटल्स जेड़े तीन ऑर्बिटल्स दी इक्वल एनर्जी है उत्थे पेयर अप हो जाए. इस केस दे विच अगर ते वो ऊपर चला जाता है इट मींस कि जेड़े लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मैटल आयन ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ d orbitals ਨੂੰ ਲਿਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, मतलब कि उन्हें splitting ज़्यादा, can see this energy gap is like in this magnitude or in this case it is high in magnitude. So इस केस में splitting ज़्यादा होगी है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप नहीं कर सकता, वो नीचे ही आके जड़ा हो चला गया. नो डाउट इतने रिपल्शन ज़्यादा हो रही है, इतने रिपल्शन घट है. क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत थोड़ा है, ऊपर जड़ा शिफ्ट हो गया. इन दिस केस पेयरिंग हो गया सारे को. सो इधर स्प्लिटिंग ज्यादा है जिसके करके पेयरिंग हो गई है. वी कैन सी दिस डेल्टा जो स्प्लिटिंग है इट इज ग्रेटर देन पेयरिंग. क्यों है? क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा है. ਜਦੋਂ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उदों पेयरिंग होगी, ਜਦੋਂ की है स्प्लिटिंग घट है तो पेयरिंग ਜਿਹੜੀ ਆ नहीं होगी. ठीक है, सो पेयरिंग एनर्जी दिस इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ एनर्जी चाहिए तो इजीली ऊपर चला जाएगा. अगर ज्यादा एनर्जी ਦੇ ਲੈਣੀ ਪਈ
कोल जेडे कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो है, फ्लोरो इज अ वीक फील्ड लिगेंड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल कि वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड ने की करना है, इहदी पेयरिंग नहीं करानी है, पेयरिंग नहीं कराएगी तो जेडे अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट दे ओके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, D6 केस है, ऊपर चले जाएंगे। बट दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिस इज वेरी स्टेबलाइज्ड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन आने दे नाल जेडी एनर्जी है वो बहुत घट लगेगी। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन नेचर कैन जंप और कैन डू इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ी जी रेडिएशन आएगी और ये ऊपर नीचे जेडे और ट्रांजिशंस करनी शुरू हो जाएंगे। इन दिस केस ये स्टेबलाइज्ड हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया मतलब कि ये इतना ज्यादा है, लोअर एनर्जी हो गई है कि ये फर्दर जंप नहीं करेगा। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जेडे है वो हमेशा की बनाते हैं अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जेडे है वो बनाते हैं, ठीक है। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस आई एक्सप्लेन ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अगर हुन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, क्यों ਪੈਰਿੰग हो रही है, क्यों नहीं ਪੈਰਿੰग हो रही। अच्छा एक चीज है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, अगर ਅਨਪੇਅਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक बहुत ही मजेदार चीज ਜਿਹੜੀ एक्सप्लेन की है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਇਹਨੇ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ पर्पल क्यों है और कोबाल्ट 3 इमीडिएटली ऑरेंज क्यों हो ਜਾਂਦਾ, ठीक है। टाइटेनियम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ पर्पल कलर क्यों है और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਹੈ ਉਹ ग्रीन कलर ਦਾ क्यों है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਬਾल्ट ਅਗਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੇ पर्पल कलर ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ कोबाल्ट की ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ मतलब ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਲੋਅਰ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਹੈ, T2g ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ। ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ, એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੁਆਂਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੁਆਂਟਾਸ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਛਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। मतलब कि सारे ट्रांजिशन मेटल्स ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਜੈਕਟ मतलब कि ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰਡ ਰੀਜਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਬਗਿਓਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਬਗਿਓਰ मतलब ਕਲਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰ मतलब ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਫॉर showing the color of the complexes. Now example is this, color is due to dd transitions of the electron. So dd transitions are possible in this case, you can see, because ligands ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ d ਆਰਬਿਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ मतलब ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ 3+ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ d1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ d1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5000 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ठीक है, ऊपर जाएगा तो अनस्टेबल ही है, बच्चों इन्हें लोअर इन एनर्जी में आना, लोअर इन एनर्जी आके ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
पर्पल कलर होएगा. These are the basis for color of the complexes. Next slide please. Now, so in the end I will conclude with these words that this theory is very useful and interesting theory to understand or to read for the students, because it gives them many expanding or explanation about the color of the complexes, which is very interesting, and magnetic properties, strong field ligand, weak field ligand, and the separating and this theory is not does not explain all the factors. Okay, it is expanded by another theories like molecular theories and ligand field theory, which is much more important to understand. But this is out of box, I think so. Now, thank you for the given time. Thank you.